चलो एक क्वेश्चन करो. किरचॉफ लॉस का कंटिन्यूशन वी आर डूइंग. द सर्किट शोन इन फिगर R1 is 1 ohm, 1 ohm. R2 is 2 ohm. So this is 1 ohm only. This is also 1 ohm. Okay. E1 is 2 volts and E2, E3 is 4 volts. Okay. I want the potential difference between A and B. I want potential difference between A and B. Okay. So potential difference चाहिए बोले तो definitely current चाहिए उसमें. उस branch में current is required. Then only we can have a potential difference. Okay. So उसके लिए आपको करंट फाइंड करने के लिए मल्टीपल सेल्स आर देयर. डेफिनेटली केवीएल वी हैव टू यूज मल्टीपल सेल्स. सो केवीएल में फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी हैव टू बैटरी से वी हैव टू प्रोड्यूस ए करंट एनी डायरेक्शन यू कैन ब्रेड एंड ईच ब्रांच में वन करंट ओनली शुड बी देयर and whatever the current is released from the battery, the same current should flow in the battery. That's the conditions, right? Okay. So here how many batteries are there? Here 2 volts and 4 volts battery is there, right? I can put one current here, I1, the I1. Okay. In this battery 4 volts है, I2 is coming. In this में I2 is coming. Okay. I1 I2 मिलके क्या होगा? Here this direction नहीं है. This one is I1 plus I2. Current will flow. आएगा and here it will go I2 current because same current should flow, right? Here I1 current. Now see एक branch has only one current. Okay. नो ब्रांच में ऑपोजिट में आकर टकरा नहीं कर रहा है. मतलब I1 I2 इज नॉट कमिंग ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. सो इट इज गोइंग ईच ब्रांच इज वन करंट. ओके. दैट फर्स्ट स्टेप. ओके. नाउ सेकंड स्टेप क्या है? लूप वी कैन टेक एनी डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. सो ले लो क्लॉकवाइज ले लो. इज द फर्स्ट लूप एंड ये वाला सेकंड लूप. So we have to apply KVL for both the loops and trying to find the current I1 I2 find करने का. हाँ यूज करो. कितना आएगा? This loop I'm taking first loop का. First loop में what is the KVL says? Summation delta V is equal to 0. Okay. Now see I'm telling try करो. See path we have to choose. Which I choose path is clockwise, right? मतलब we have to walk like this. Here, 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 and again come back to the same position. Okay. Now, when you're going from minus to plus, need lower to higher potential, we should take as plus 2 volts. Okay. जा रहे. And current and path are in the same direction. So, minus I1 into R is 1 ohm. Okay. Again walking from here to here. Current and path are in the same direction. Minus I1 plus I2 into 2 ohms. Okay. Again from plus to minus, minus 4 volts. Again, current and path are in the same direction. This is 1 ohm, right? Current and path are in the same direction. So minus I1 into 1 is equal to 0. Right? So क्या होगा? 2 minus I1 minus 2I1 minus 2I2 minus 4 minus I1 is equal to 0. So minus 3I1, minus 3 minus 4, right? Minus 4I1 minus 2I2 minus 2 is equal to 0. 3 minus 4I1. So 2 minus 2 is common ले लो. So 2I1 plus I2 plus 1 equal to 0. So this is the first equation. 2I1 plus I2 plus 1 equal to 0. Okay. Now second equation form करो. And before solving, tell the second equation also. Otherwise wrong हो जाएगा पूरा.
Sir, 7I2 plus 2I1 is equal to 0. सेकंड वन ना, नो. फर्स्ट वन सेम आया आपको, दिस वन गॉट सेम. हाँ, सेकंड वन साइन कन्वेंशन मिस्टेक क्या होगा देखो. 2I2 plus I1 is equal to 0. 2I2 plus I1 equal 0. Yes. Sign convention mistake क्या होगा देखो. So I'm going like this, right? So minus 2 plus 4 volts. बाद में current and path I'm going like this, right? हाँ, current and path are in the opposite direction. Plus I1 plus I2 times 2. Then current and opposite direction plus I2 into 1. Next minus 4 current and path opposite direction minus I2 into 1 is equal to 0. So 4 plus 2I1, 3I1, 3 minus 2 plus 2I2, 2I2. Okay, I1, I1. 4 plus 2I1 plus 2I2. A plus I2 minus I2 cancel. So minus 4 equal 0. So minus 4 plus 4 cancel. Something mistake. 2I1, 2I2. देखो क्या मिस्टेक किया. I2 into 1 will get I1 plus 2I2 is equal to, मतलब ये 4 आएगा, ये 4 आएगा. हाँ, मतलब ये प्लस है. Here current and path are in the same direction, right? Opposite direction, right? So plus. So कितना होगा? Plus means 4I2. Yes. So commonly तो what you got? I1 plus 2I2 is equal to 0. Second equation. Sign convention mistake मत करो. Now solve these two equations. First equation, second equation solve करो. Sir, I2 is 1 by 3, I1 is minus 2 by 3. I1 is minus 2 by 3, I2 is 1 by 3. Yes. Now, what is I1 plus I2? Add करो. With negative 1 we should take. Minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Okay. Minus 1 by 3 means, what is the meaning? The current is going down, up to down or down to up? From Final D answer to minus A. है ना, और sign convention is wrong. So उल्टा. So ऐसे जा रहा है. Okay. Now we are asking potential difference between A and B, right? So आपको क्या करेंगे? उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग potential difference फाइंड करो. This is 4 volts. This is 2 ohms. And the current is going how much? Minus 1 by 3, right? 1 by 3 amperes. Current is flowing. Okay. Now solve potential difference A and B. Like, you know, right? How to apply KVL in the one straight line. Sir, 13 hours. Fifteen by 3. How much? 15 by 3. 15 by 3, yeah? No. Sign 10, conventions देखो. हाँ. 10 by 10 3. by 3. 10 by 3 is, yeah. Sadik, how much got? So 10 by 3. Minus 10 by 3 आएगा ना? PV minus V है.
-10/3 +10/3 I got plus 10 with sign terms. माइनस आएगा चलता ना पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज VB minus VA you're telling, right? Or VA minus VB, yeah? You got Yeah. Shyam? हाँ आया ना 10/3 आया -10/3 आया आपको सर आई टू व्हाट इज माइनस माइनस फिल देखो एक बार अप्लाई करके देखेंगे चेक करेंगे राइट और रॉन्ग एक केवीएल आपको पेशेंस से करने का देखो so here I'm starting I can go from here to here, right? I can go anywhere, right? You're going from up to down or bottom to bottom to upper? Which one? ठीक है, you're going like this path. So VB minus to plus 4 current and path are in the same direction minus IR, right? So 1/3 times of 2 is equal to VA. So VA. Okay. So कितना VB minus VA is equal to कितना होगा इधर इधर सॉल्व किया तो 12 minus 2 10/3, right? So उधर गया तो -10/3 VB minus VA. Okay, because current will flow from higher to lower. The current direction is from higher to lower, right? So that means VB is higher, VA is lower, right? So yeah, you are trying to find VA minus VB, yeah? VB minus VA is 10/3 और VA minus VB is 10/3. ऑप्शन में देखने पड़ेगा क्या बोल के, ओके? अंडरस्टूड, राइट? ये वाला चलो नो करो देखते विदाउट हेल्प करो आई अपलोडेड द PYQs का एक बार देखो क्वेश्चंस इतना सारा क्वेश्चंस है सो मेनी क्वेश्चंस कंपल्सरी आएगा एग्जाम में potential difference across each cell. This is internal distance. मतलब internal distance I told you it is inside the cell. This internal distance is inside the cell. ये पूरा एक ही cell है. Okay. Now find the potential difference across each cell. मतलब indirectly we have to find currents. Then only we can get potential difference. Okay. Battery से current निकालो same thing. Battery से current निकालो. So this is I1. Battery से current निकाला. ये जा रहा है. इधर से भी बैटरी से करंट निकाला I2 सो इधर क्या आएगा I1 प्लस I2 जाएगा इधर I1 जाएगा एंड दिस विल बी I2 उसके बाद we have to choose a loops we are taking first loop and second loop clockwise and apply KVL and trying to find current I1 I2 So, do you want the equations first? Okay, tell me equation 3I1 plus 2I2 is equal to 3. is equal to 3. 6 आएगा
3i1 plus 2i2 equal to 6. Yeah, 6. Second one. 4i1 plus 5i2 is equal to 6. Yes, correct. No solve. i2 i1 आएगा. Sir, I1 is 6 and I2 is minus 6. i1 is 6 है ना, wrong. Equation same आया देखो. हाँ, then multiply. Sir, minus 6 by I2 is minus 6 by 7 and Yes. I1 is 18 by 7. Perfect. i1 is 18 by 7. Okay. That means here i2 हम लोग नेगेटिव आ रहे मीन्स क्या है, इसका डायरेक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन. मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपको क्या करेंगे, आपको करंट का सिंबल चेंज करके करने का. कितना 6/7 एम्पियर्स इज फ्लोइंग. ओके, दिस इज ए, मान लो दिस इज बी. ओके, so plus minus distance 1 ohm. Now find potential difference. What is the, this is internal distance, right? Internal distance, right? What is the, how to find terminal voltage? Potential difference is nothing but terminal voltage only, right? Terminal voltage का formula क्या है? This is charging or discharging in this case में? वाला charging or discharging? Discharging. Discharging नहीं है, cell के तरफ आ रहा है, current is coming, right? When I put a mobile charging, when you on the switch, the current is coming towards the cell. देखो, current is coming towards the cell. So this is charging. Charging में what is the formula terminal voltage? Delta V is E plus IR. याद है? Discharging में E minus IR. We done cells, right? Cells में A आएगा. Okay. ये वाला इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, इस सेल का, फर्स्ट सेल का. ये वाला क्या है? Discharging. That time we have to use E minus IR. Okay. Use the terminal voltage and find the potential difference. Sir, for the 6-volt one, it's 36 by 7. 36 by 7, huh? No. Minus 36 by 7. No. E plus IR, right? E is how much? 6, right? 6 plus I is how much? I1, I2 in this branch mein. I2, right? Or 48 by 48. 48. 48 by 7. Yes. And second one? And same, 48 Same, by 48 by 7. 7, yes. Because parallel में voltage is same, right? ये resistance का किया था भी 48 by 7 ही आएगा. Understood? So we use KVL over here. We just use this formula because Which one? We can use KVL also.
but from here to here we can use KVL. No problem, straight line में. Okay. So always any circuits में anything also KVL will help you a lot. Anywhere you can find current and voltage. Any circuit you can solve. Okay. Chalo. Now, Sir, tell me. sir, I have one doubt. Sir, why can't Tell we me. use V is equals to IR and take those two as Which one? This I1 one. and I2? I1 and I2. What do you do? Sir, can't we just take V is equals to IR? To find terminal voltage. IR means you are getting only potential drop across this one. But ये cell का cell का voltage also that terminals across means इसका terminals across I want. You are telling only V equal IR only for this voltage. Okay, so that's why here IR is nothing but this only potential drop only. E plus IR cells में we done this one. Okay, cells में discharging case अलग है, charging case अलग है, we done. Okay, now थोड़ा advanced level में we are going. ये वाला क्या है? Only advanced में आएगा. This question will be coming only in advanced level में. Okay, करेंगे? डर लगेगा? करेंगे ना? Okay. चलो. Unbalanced Wheatstone bridge. Unbalanced Wheatstone bridge. So मतलब नॉर्मल Wheatstone ब्रिज का सी नॉर्मली फर्स्ट हम लोग डिफरेंट केसेस में गया लाइक वायर कनेक्शन प्रॉब्लम इनफाइनाइट नेटवर्क ऐसा मेनी क्वेश्चंस वी डन. उसके बाद अनबैलेंस में कैसे करने का स्टेप बाय स्टेप इज देयर वी विल हैव टू फॉलो दैट वन. ओके चलो लिखते जाओ. ही इज आस्किंग इन दैट में ही विल टेल टू फाइंड इक्वल रेजिस्टेंस यूजिंग किरचॉफ लॉस. Okay, we are trying to find equivalent resistance which is unbalanced Wheatstone bridge में by using Kirchhoff laws we are trying to find equivalent across R equivalent across A and B. He will simply give the circuit and he will tell find the R equivalent across A and B. So at that time you will try for potential method नहीं आएगा, ये method नहीं आएगा, ये method नहीं आएगा, balance भी नहीं आएगा. Then क्या करेंगे बोले तो ये method करना पड़ेगा. Last method. Worst case में कुछ भी नहीं होगा बोलते इसमें जाओ. Okay. तो इसका क्या है देखो. Connect an imaginary battery of EMF V across two terminals about which equal distance is to be calculated. First step क्या है? Wherever we want to calculate the R equivalent, we have to connect a battery. First step, simply across imaginary battery we have to connect across the terminals. Second step, draw current I from the battery and distribute it in different resistors using KCL, Kirchhoff current law, with minimum number of variables. So second step क्या है? Imaginary battery connect किया, बाद में current निकालो and use always minimum number of variables. Minimum number of variables means देखो, suppose I is there, current is coming, इधर I1 जाएगा. Instead of using I2, I can use the remaining current will be I minus I1. So minimum number of variables we have to use. Don't use for I3. So many multiple equations लगाना पड़ेगा that time. Problem हो जाएगा. Okay. Next third one is calculate current across different resistors. So after putting the currents by using KVL, we will calculate the different currents across the different resistors by using KVL. Next, after calculating different currents, take a loop. Important step. Take a loop including battery. Battery should be there compulsory. And minimum number of resistors. Apply KVL and find V. So after finding currents in each branch, आपको क्या करने का? We will take one battery and we will take one small loop which is having minimum number of resistors. Okay. And last में equate with V equal to I into R equivalent. So from this, by equating, we can get the complete R equivalent from the circuit. Ka. Unbalanced Wheatstone bridge ka R equivalent we can get.
फिनिश्ड। चलो, तो ये वाला यूज करके वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, फाइंड द इक्वल डिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ना नॉर्मली व्हेन वी सी दिस टाइप सर्किट में आपको कैसे सॉल्व करेगा? पोटेंशियल मेथड क्या, तो ए बी बी लगा के, इधर एक्स लगा के, इधर वाई लगा के, वी विल सी द व्हीटस्टोन ब्रिज। बट व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना इधर? 2 into 2 4, 4 into 4 16। नहीं, इट इज नॉट an unbalanced व्हीटस्टोन ब्रिज, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चंस। सो आपको डेफिनेटली वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग केवीएल का यूज करके सॉल्व करने का वाला है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? वी हैव टू कनेक्ट एन बैटरी wherever you want to find the R equivalent across the circuit. V, that is first step. Second step क्या बोला? We have to put the current and distribute the current such that we'll get the minimum number of variables. Minimum number of variables आने के लिए. So current is coming, I current is coming. Okay, here I am putting एक जगह में I1. This will be how much? I minus I1. To get minimum variables I am trying to get. Okay, so इधर इसमें करंट में कितना जा रहा है? इस ब्रांच में I minus I1. ओके, हाँ इधर गया, इसमें क्या क्या है? I1 करंट गया, राइट? नाउ अगेन I1 के पास दो रास्ते हैं, इधर एंड दिस वन। सो दिस इज I2 मान लो, दिस विल बी हाउ मच? I1 माइनस I2, राइट? हाँ, नो इधर आएगा, इधर I2 आ रहा है। हाँ, इसमें करंट कितना है टेल में? इधर I माइनस I1, ये I2। सो KCL जंक्शन में अप्लाई किया तो क्या है? वी हैव टू ऐड ऑल द करंट्स, राइट? सो I माइनस I1 प्लस I2, करंट इज कमिंग, ये करंट जा रहा है। ये भी इधर क्या करंट है? I1 माइनस I2 करंट आ रहा है। तो इधर क्या था? I माइनस I1 प्लस I2 करंट आ रहा है, राइट? हाँ, मिलके क्या होगा देखो? प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल। सो फाइनली आपको करंट आई आ जाएगा। सो बैटरी से कितना करंट निकाला, उसी करंट आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का, KCL यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करने का, ऑलवेज ट्राई टू टेक द मिनिमम वेरेवर करंट इज डिवाइडिंग, टेक द मिनिमम वेरिएबल्स। I1 लिया, इधर I2 लिया ना, इधर I1 माइनस I2 ले लो, ऐसा। डोंट टेक I3, कॉम्प्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ। सो इधर अभी इधर वेरिएबल्स क्या थे? I1 इज देयर, I2 इज देयर, वी हैव टू फाइंड, राइट? इन टर्म्स ऑफ I में, बिकॉज वी डोंट नो टोटल करंट, राइट? इन टर्म्स ऑफ I में वी आर ट्राइंग टू फाइंड द I1 I2। सो थर्ड स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाय यूजिंग KVL ट्राई टू फाइंड करंट्स। ओके, टेक द लूप्स एंड फाइंड द करंट्स, फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप। नीटली करो एंड इक्वेशन बोलो, फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप। KVL apply, first loop. I1 I2 इन टर्म्स ऑफ I में आएगा।
So equation आगे बोलो, first equation, second equation. Is it 2i is equal to 3i1 plus i2? 3i1 plus i2 equal to y. That is first equation. The second equation. I is equal to 3i1. No. Sir, 4i2 भी I इसका है. is, yeah, sir, I is equal to 3i1 plus 4i2. Correct. So 4i2 minus 3i1 is equal to minus I बोल के है. Two equations you got. Now solve in terms of I1, I2 in terms of current I में आएगा. Sir, I1 is equal to minus I by 3. I1 is equal to minus I by 3. No. Sir, I1 is equal to 3i by 5. Yes, correct. I1 is equal to 3i by 5 and I2 I2 is is equal to 5. I by 5. Okay. So you got these two. And in terms of I में आया I1, I2. Okay. Now what is the next step? What they told? Last but one वाला कौन सा है? What he told? देखो after calculating different currents, take a loop. एक loop लेने का, including battery. Battery तो compulsory रहेगा. And minimum number of resistors should be there. Apply KVL. Okay. So क्या करेंगे? I will take a loop which has battery. And minimum number of loop means देखो इधर से एक loop बन रहे तो 1-2 resistors are there. That's it. I can make this also. This also 1-2 resistors only. I cannot make like this, right? 1, 2, 3. ऐसा ना. So 3 resistors नहीं आने का, 2 resistors आने का. Either you can take top loop or bottom loop also. Any loop you can take. But minimum number of मतलब starting point से आप रास्ते जाने का कैसे भी रास्ते जाओ, but minimum number of resistors should come and again come back to the battery. Okay. So I am taking here top loop में 2 ohm, 4 ohm. I am connected with the battery. Okay. So here current is इस ब्रांच में I1 था एंड ये वाला इसमें क्या था ब्रांच में, इस ब्रांच में क्या था I1 माइनस I2. उसका करंट वही लेने का, इट्स नॉट चेंज अगेन. ओके. सेम करंट है एंड दिस इज V एंड हियर करंट I. चलो. नाउ वी टुक really understood, we took a battery and a minimum number of resistors. Now apply KVL here for this one and try to find V. Try to find V because our interest is to calculate R equivalent. So V find करो a loop में. So V current and path are in the same direction minus I1 into 2 बाद में minus I1 minus I2 times 4 equal 0. So V minus 2I1 minus 4I1 plus 4I2 is equal 0. So क्या है V minus 6I1 plus 4I2 is equal 0. Now I1 I2 substitute करो एक बार. I1 I2 you substitute in the equation. This is substitute करो I1 I2. Try to get in terms of I. 14 by 5? 14 by 5I. Very good. So V is equal to 14 by 5I. Yes. Just substitute I1 के जगह में ये वाला, I2 के जगह में substitute, will get 14 by 5.
And last one, what it told? Compare with V equal to I into R equivalent. Total current into R equivalent. टोटल करंट कितना आई था ना, आई इंटू आर इक्वलेंट. तो कंपेयर करो कितना आएगा, दोनों इक्वल किया था. व्हाट इज आर इक्वलेंट? When you 14 by compare 5. 14 by 5 ohms is answer. तो मेरा एक बार 4 मार्क का क्वेश्चन और डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन देगा अंडर लिस्ट में, इतना ऐसे बड़ा क्वेश्चन एडवांस में. इट्स गुड. एडवांस में आई टोल्ड राइट, 100 आए तो भी रैंक आ जा रहा है. गेटिंग इन आईआईटीज 100 out of 360. So getting IITs is easy actually. पूरा no one will do. No one can do all the questions because वो wantedly थोड़ा something देगा. They can add one engineering question. उसमें क्या कौन बोलेगा ना बोलेगा. So no one can do that all questions. But क्या करेगा बोले तो some questions मतलब properly not negative marking check करके proper question वाला जो easy है वो करने का. And cutoff section cutoff will be there, right? Each paper has section cutoff. If you do physics only and मैथ्स ओनली, केमिस्ट्री नहीं किया तो खत्म, कलर्स रैंक नहीं आएगा ऐसा. ओके चलो, नाउ क्वेश्चन और भी एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा. ओके हाँ, देखा ना क्यूब. क्यूब के पास मतलब ऐसे ऐसे ड्रॉ करो नॉर्मली. कैसे ड्रॉ करेगा? ऐसा ऐसा. देन पुट द रेजिस्टेंस, टिक 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 ऐसा. 12 रेजिस्टेंस राइट लगा दो. ओके बड़ा में थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे से थोड़ा इजी होगा. ओके ये टॉपिक एक है थोड़ा हार्ड है, डरना मत. ओके चलो, नाउ इसका आर इक्विवेलेंट चाहिए. डेफिनेटली इसको सीरीज पैरेलल नहीं है, कोई मेथड नहीं है राइट. वी हैव टू गो फॉर लास्ट मेथड. ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू कनेक्ट ए बैटरी अक्रॉस द V. A and B वे कनेक्ट V. ओके इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसा रेसिस्टेंस में. देखो ए से बी तक जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आने के लिए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रेसिस्टर्स यू कैन क्रॉस ए से बी आने के लिए? So 3. 2 only. Where 2? So 3. 3. देखो 1 2 3 और 1 2 3 ऐसा भी. सो समथिंग इधर घूम के तो 4 ऐसा. मिनिमम नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इज 3 राइट. ओके सो मैं क्या करूंगा, इधर इधर तक आने के बाद करंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा राइट. सो आई विल टेक, इजी होने के लिए आई विल टेक करंट 6i इंस्टेड ऑफ आई विल टेक 6i. फ्रैक्शन में नहीं आएगा. ओके नो 6i इधर तक आया. वाई 6i यू विल अंडरस्टैंड हियर. नो सिंस आर 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 इज देयर, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा बोलो करंट्स? 3i. Because same resistance, right? Equal 2i, current will 2i. go. 2i, 2i, 2i. Okay, fraction नहीं आएगा इसलिए मैंने ऐसे लिया. ओके नाउ 2i इधर आया. इधर आने के बाद अगेन 2 पार्ट्स आर देयर. इधर आई जाएगा, इधर आई जाएगा राइट. नेक्स्ट सो इधर इसमें आई जा रहा है ना. हाँ नाउ इसमें क्या होगा, इसमें 2i आ रहा है. अगेन इट्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. आई आई इस ब्रांच में करंट आई. सो ये जाकर आई एंड आई अगेन 2i राइट. इधर आई एंड आई मिलके 2i आ रहा है. ओके इसमें इधर जो 2i अगेन दिस आल्सो स्प्लिटिंग इन 2 पार्ट्स. आई आई इधर आई एंड आई मिलके 2i आया. 2i इसमें 2i आया. ओके इसमें क्या होगा, आई इसमें आई मिलके इसमें 2i. सो देखो 2i 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 तीनों मिलके अगेन 6i के मिलके. So no fraction will be there. Okay. Now आपको already only one current only. There is no I1, I2 नहीं है. So आपको current find करने की जरूरत नहीं है. Take a last step directly. Went to go for a last step. Last step क्या है? We should connect a battery and minimum path लेने का. कोई भी path ले लो. Minimum 3 resistors रहने का, right? 3 resistors is the minimum path, right? So I am taking इसका नाम करो A, X, Y, B. सो मैं क्या करूंगा, A, X, Y,
B ले रहा हूँ. Okay, so A, X, Y, B. So battery. Okay, now KVL apply करो directly, no need of drawing also. KVL apply करो. So what is the step I told you? You take a minimum number of battery and this path I am taking. Okay, now apply KVL for this one. Tell me. इधर से इधर तक plus V. Okay, path and current are in the same direction. So minus 2I into R. IR, right? इसमें इसमें क्या होगा? Path and current are in the same direction. Minus IR. Okay, either path and current are in the same direction. Minus 2IR is equal to 0. Right? Now V equal to how much? V equal to minus 3IR minus 5IR minus 4 5IR, right? Minus 5IR plus 5IR, right? तो गया तो okay. Now this one आया ना, ये वाला. What is the last step क्या है? We have to equate this in is equal to V is equal to कितना आएगा? इधर I is how much? I is how much? Total current, right? 6I into R equivalent. Equate with these two equate करो and find R equivalent. 5IR is equal to 6I R equivalent. Because I told you last में V equal to I into R equivalent. Either I is 6I, right? That's why I 6I लगाया. So I cancel. R is equivalent is equal to 5 by 6 ohms. R equivalent is equal to 5 by 6 ohms. 5 by 6 R, right? 5 by 6 R. 5 by 6 R. Okay. So आपको ये समझ में, this is called what? This is called body diagonal. Body diagonal में आपको final result आपको याद रखो. Sometimes मेंस में डायरेक्ट पूछेगा. Directly you can write 5 by 6 R. Okay. Body diagonal का R equivalent is always 5 by 6 R when R are connected. In this case में देखो एक conclusion लिख लो. So body diagonal का it is R equivalent is 5 by 6 R लिखो. R equivalent is 5 by 6 R. And next one is ये क्यूब का अगर टर्मिनल्स if I take the edge में लेगा same remaining all R. At that time what is R equivalent is 7 by 12 R. And last one फेज डायगोनल बोलते हैं. देखो फेज का टर्मिनल्स अगर मैं लिया तो सेम प्रोसीजर किया तो विल गेट R equivalent is 3 by 4 R. खत्म. Complete Kirchhoff laws done. Okay. We left with grouping, electrical energy and meter bridge. 3 topics, 3 classes. Okay. पूरा डन हो जाएगा ग्रुपिंग का.